Hello, dear students of class 11th. Yesterday we covered 3D vectors in Cartesian coordinate system. Now we will do certain more examples on 3D vectors in Cartesian coordinate system. We have to find PQ vector, QP vector, PQ magnitude and QP magnitude, PQ direction and QP direction if P is 3, 4, 5 and Q is 1, 9 and 10. So yesterday we have covered that P is the initial point, Q is the final point. So it will be PQ vector. Here P is initial and Q is final. So its formula will be x2 minus x1 I cap, y2 minus y1 j cap, plus z2 minus z1 k cap. These acts as first coordinate, these acts as second coordinate. So ये क्या बन जाएगा 1 minus 3 I cap plus 9 minus 4 j cap plus 10 minus 5 k cap. So vector will be minus 2 I cap, 5 j cap plus 5 k cap. So this will be our PQ vector. If we find out its magnitude, it will be under root x component square plus y component square plus z component square. It will be 4 plus 25 plus 25 under root 54. We want to find its direction. This is vector, this one is its magnitude and this one is the direction. So direction will be vector divided by its magnitude. Direction is minus 2 I cap, 5 j cap plus 5 k cap. And magnitude is under root 54. So direction will be minus 2 I cap plus 5 j cap plus 5 k cap divided by under root 54. Now we have to find QP vector. So QX has initial coordinates whose coordinates are 1, 9 and 10. These are acting like x1, y1 and z1. And P is 3, 4 and 5. These acts as x2, y2 and z2. So QP vector will be x2 minus x1 I cap. यहाँ पर x1 x2 चेंज हो गया क्योंकि हमारा इनिशियल क्या है q, फाइनल क्या है p. प्लस y2 माइनस y1 j cap plus z2 minus z1 k cap. So it will be 3 minus 1 I cap plus 4 minus 9 j cap plus 5 minus 10 k cap. It will be 2 I cap minus 5 j cap minus 5 k cap. And you can see from here both are opposite to each other. इसमें पॉजिटिव है तो इसमें नेगेटिव है, इसमें पॉजिटिव है तो इसमें नेगेटिव है, तो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है. If we want to find out its magnitude, so magnitude will be under root of x component square, y component square, z component square. So it will be QP and it will be under root 4 plus 25 plus 25. It will be under root 54. Direction will be QP cap and that will be vector divided by its magnitude, and vector will be 2 I cap minus 5 j cap minus 5 k cap divided by under root 54. I hope you are able to understand that. Kindly note it down, pause the video and have a recap on it. So in this way we are able to find out position vector, then direction and magnitude, both in 1 dimension, 2 dimension and 3 dimension. So now we can move forward towards types of vectors. Types of vector. Sorry.
unit vector. Sorry. Unit vector. What is unit vector? Vector having magnitude 1. Vector having magnitude 1. And it helps to find direction. Sorry. It helps to find direction. Example, I cap. What I cap is telling? What I cap is giving us? What I cap is telling us? I cap is telling us positive direction of x-axis. I cap is telling us positive direction of x-axis. And इसका magnitude कितना है? Its magnitude is 1. Its magnitude is 1. And it represents positive direction of x-axis. Positive direction along x-axis. इसके अलावा अगर हम लिखें I cap plus j cap by root 2, check its magnitude. Its magnitude will be under root of 1 by root 2 का square plus 1 by root 2 का square. So ये क्या बन जाएगा? It will be under root 1 by 2 plus 1 by 2. It will be 1. So definition क्या बोलती है? इसका magnitude क्या होगा? 1. और ये सिंपली क्या बताएगा? डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा. नेक्स्ट इज पैरेलल वेक्टर्स. पैरेलल वेक्टर मींस when direction of two vectors are same. When directions of two vectors are same. जब दो वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम होगी तो उसको बोल देंगे पैरेलल वेक्टर. अगर एक है आई कैप और दूसरा है 2 आई कैप, दोनों की डायरेक्शंस क्या है? सेम है. और डायरेक्शन कौन बता रहा है? आई कैप. इसमें पॉजिटिव और इसमें भी क्या है? पॉजिटिव. बट इसकी लेंथ जो है ज्यादा बड़ी है, इसकी छोटी है. बट स्टिल हम किसके बेस पे देख रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन. एंड इफ आई से anti-parallel vectors, if I say anti-parallel vectors, next one is anti-parallel vectors. Anti-parallel vectors. So anti-parallel vectors में क्या है? When direction of two vectors are opposite. When direction of two vectors are opposite. एग्जाम्पल के लिए अगर एक वेक्टर है j कैप और दूसरा है -3 j कैप. j कैप कहाँ है? अपवर्ड डायरेक्शन में. -3 j कैप कहाँ पर है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में. बट ऑपोजिट क्या है एक दूसरे के? सो एंटी पैरेलल मींस व्हेन दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर. नेक्स्ट वन इज opposite vector. या फिर नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर. नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर. वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन. ए वेक्टर हैविंग same magnitude but opposite direction. Having same magnitude but opposite direction. चेक करते हैं. अगर मेरे पास ए बी वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप, तो इसका ऑपोजिट या नेगेटिव वेक्टर क्या हो जाएगा? इट विल बी ऑपोजिट टू इट. सो इसमें पॉजिटिव है तो इसमें नेगेटिव आ जाएगा. -2 आई कैप माइनस जे कैप.
तो इस तरह से हम बहुत सारे टाइप्स बना सकते हैं, जरूरत पड़ने पर मेंशन करते जाएंगे। फिलहाल ये 2-3 को बेसिक में क्लियर रखना है। यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, सिर्फ डायरेक्शन बताता है। पैरेलल वेक्टर, जिनकी डायरेक्शंस क्या रहती हैं, सेम होती हैं, मैग्नीट्यूड्स में भी अनइक्वल। एंटी पैरेलल में जिनके डायरेक्शंस ऑपोजिट होती हैं। नेगेटिव ऑफ वेक्टर मींस जो भी वेक्टर दिया गया उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब उसके साइंस क्या हो जाएंगे, रिवर्स, उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी गिवन वेक्टर से। नोट कर लीजिए पोज करके। यस, नेक्स्ट कम्स एडिशन ऑफ वेक्टर्स, या फिर एक क्वेश्चन करते हैं इसी के ऊपर। इफ a vector is equals to ai cap plus 2j cap plus 4k cap represents unit vector, find value of a, we have to find value of a so that a vector क्या बताया, यूनिट वेक्टर। सो हमने डेफिनेशन पढ़ ली यूनिट वेक्टर की, क्या होती है, यूनिट वेक्टर कौन सा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, whose magnitude is 1। सो इसका मैग्नीट्यूड क्या बनेगा, अंडर रूट एक्स कंपोनेंट स्क्वायर, वाई कंपोनेंट स्क्वायर, जेड कंपोनेंट स्क्वायर क्या है 1। स्क्वायरिंग करते दोनों तरफ क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 4 प्लस 16 इज 1। ए स्क्वायर इज 1 माइनस 20, सो ए स्क्वायर कितना बन जाएगा, माइनस 19। सो ए की वैल्यू क्या बन जाएगी, अंडर रूट माइनस 19, विच इज अ इमेजिनरी नंबर। इसका मतलब इस पर्टिकुलर केस में जो हमने रैंडम एग्जांपल ली है, इस केस में कोई भी ऐसी ए की वैल्यू नहीं है जो इसको क्या बना दे, यूनिट वेक्टर। सो फॉर गिवन सिचुएशन नो वैल्यू ऑफ ए कैन मेक इट यूनिट वेक्टर। अब जरूरी जबरदस्ती कर देना है, अगर नहीं आ रहा है तो जबरदस्ती नहीं करना है, कंडीशन सेटिस्फाई करानी है। और कंडीशन क्या बोलती है, मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, 1। लेट्स हैव वन मोर एग्जांपल। find value of a, find value of a so that a vector is equals to ai cap plus j cap minus k cap divided by under root 5 is a unit vector। हमें बताना है कि a वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर है। तो एक ही कंडीशन बतानी है। तो यूनिट वेक्टर होने पर मैग्नीट्यूड क्या होता है बच्चे, 1। सो मैग्नीट्यूड 1 है तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे, बनेगा अंडर रूट ए स्क्वायर बाय 5 प्लस 1 बाय रूट 5 का स्क्वायर 5 प्लस 1 बाय 5 किसके बराबर है, 1। स्क्वायरिंग कर देंगे, बन जाएगा ए स्क्वायर बाय 5 प्लस 2 बाय 5 इज 1। ए स्क्वायर बाय 5 इज 1 माइनस 2 बाय 5। ए स्क्वायर बाय 5 इज 5 माइनस 2 बाय 5। सो ए स्क्वायर कितना बन जाएगा, 3। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस रूट 3। सो व्हेन ए इज प्लस माइनस रूट 3 देन दिस गिवन वेक्टर विल बी यूनिट वेक्टर। सो इसमें तुम देख सकते हो डायरेक्टली यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन यूज हो रही है। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस वन। सो कल हम स्टार्ट करेंगे बच्चे अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स, अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, एडिशन ऑफ वेक्टर्स सबसे पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद पढ़ेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स के बाद पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट, और उसके बाद हम करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा। बाकी का जो पैरेलल और एंटी पैरेलल वाला है वो डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट के बाद इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उससे और क्लैरिटी पकड़ेंगे। थैंक यू।